Welcome everyone. This will be the another class. This topic is mostly from the unit second, that is the chromatography. Uh, in this particularly we will discuss about the ion exchange chromatography, kind of a very interesting method to separate the sample based on the ions, the charges they have. So ion exchange chromatography is mostly what it is actually the exchange of the ions between the ions present on the sample and the present on the ion exchanger materials. Okay. So in detail we will discuss about this. So ion exchange chromatography give you the separations based on what? Based on the attraction between the ions which is present on the sample that has to be separated, and the ions or the charge which is present on what? Which is present on the stationary phase. Okay. Stationary phase mostly we will take the certain chemicals that act as a stationary phase, onto which we attach the certain charges. So there is the actually reversible exchange of the charges or the ions between the solution and the which is present on the stationary phase or the ion exchange resins, right? So there are two types of this ion exchanger resins material. One is called, that is the anions, right? Anions is what? It is the negative charge ions, right? But it should consist of the positive charge group which is present on the material. Okay, therefore the this positive and this negative, they can bind together. Okay, so anion exchanger consists of the positive groups or the positive charge as a counter ion, whereas the cation exchanger, they consist of the negative counter ions. Okay, cation means what? It is the positive charge, right? Okay, so positive charge के लिए कौन bind होगा? Negative group. Therefore we keep the negative group on the cation exchanger material. Okay, so these two types of the exchanger materials are present into the ion exchange chromatography. Okay, so basically what we will separate the molecule based on their charges. So this charge will be exchanged between the solution and between the stationary phase. Okay, so in case of its principle, so for example we consider this. This is what, this is whole a column. Okay, inside of which we have the stationary phase. Okay, which is actually E and E plus. Okay, that means E is what? Is the exchanger material, right? Onto which we either put negative charge or the positive charge. Okay, here you can see we have filled this stationary phase with the exchanger material. Okay, और उस exchanger material को we have attached either positive charge. Okay, this Y plus is what? Positive charge counter ion. Okay, and this is the Y negative, this is the counter ion negative charge. Okay, so when we add the sample कौन सा होगा? अभी यहाँ पे हमारा sample है यहाँ पे X. Okay, so this X sample with having the positive charge, when we add to the exchanger material, okay, उस exchanger material पे क्या है? Y plus, that is counter ion के पास positive charge है. When we add this together, what will happen? The sample which is to be separated will get binds to the exchanger यहाँ पे like this, right? And इसको किसने replace किया? ये replace the counter ion, that is the Y plus. That means Y के पास positive charge है, X के पास positive charge है, तो X will replace the Y and binds to the exchanger material. So exchanger के पास है negative charge और sample के पास है positive charge. Those negative positive they bind and the counter ion get displaced, right? Similarly, अगर आपके sample पे negative charge है, whether it is an ion, okay, then it will binds to the, then you have the separate arrangement. ठीक है, यानी exchanger पे आपको positive charge रखना है और counter ion जो होगा उसके पास negative charge. ठीक है, so counter ion के पास और sample के पास दोनों का same charge होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखो इसके पास positive है, इसके पास positive है, इसके पास negative है, इसके पास negative. That means the counter ion charge and the sample ion charge should be similar, then and only they can replace. Okay, so ये जब हम डालेंगे तो it will get binds to the exchanger. Okay, और replace किसको करेगा? ये counter ion को यहाँ से replace कर देगा. ठीक है, so अगर आपको positive charge samples को separate करना है, we will use cation exchanger, and if we have to separate the negative charge sample, then we will use the anion exchanger.
Okay, so this is what inside the column we will fill the stationary phase with the particular charges ions and the counter ions, and then finally we add the sample. The sample will replace the counter ion which is present onto the exchanger material, right? So this is exactly the previous example. So this is whole is what it is your stationary phase. Okay, जहाँ पे हमने एक एक्सचेंजर मटेरियल लगाया. एक्सचेंजर मटेरियल आगे बताऊंगा what will are the types. Okay, this exchanger material is having particular charge. Okay, और उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, लगे रहेंगे काउंटर आयंस, यानी बाहर से हम काउंटर आयंस को अटैच करेंगे. सो नेगेटिव चार्ज वाला एक एक्सचेंजर मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड द रेजिन. ओके, उसके ऊपर काउंटर आयन लगा दिया हमने. फिर हमारे सैंपल को जब आइसोलेट करना है यहाँ पे, तो वी विल, हमारा सैंपल क्या है, एक्स सैंपल है जिसके पास कौन सी चार्ज है, जिसके पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये जब हम डालेंगे तो ये एक्स क्या करेगा, दे गेट रिप्लेस्ड. ओके, वाई प्लस को वो रिप्लेस कर देगा और खुद जाके वो बाइंड हो जाएगा एक्सचेंजर पे यहाँ पे. ओके, सो ये जो वाई प्लस है, काउंटर आयंस है, दे विल ऑल गेट रिमूव्ड और आपका सैंपल यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एक्सचेंजर पे. फिर इस सैंपल को हम बाद में आइसोलेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दी आयनिक स्ट्रेंथ और बाय चेंजिंग दी पीएच ऑफ द बफर. बाद में हम इन सबको आइसोलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो ओवरऑल व्हाट, देयर इज द एक्सचेंज बिटवीन द काउंटर आयन, ये वाई, ओके, एंड हमारा सैंपल, ओके, एक्स. ओके, सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में पहले ही बताया मैंने, देयर इज द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस और द आयंस बिटवीन द काउंटर आयन, ये काउंटर आयन, काउंटर आयन कहाँ पे रहेगा, रीजन्स पे लगा रहेगा हमारे, एंड द आयंस प्रेजेंट ऑन द सैंपल्स, राइट. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन बाय द कैटायन एक्सचेंज. दैट इज हमें पॉजिटिव सैंपल को जब एक्सचेंज करना या सेपरेट करना होगा, राइट. इन केस ऑफ एनायनिक एक्सचेंजर, यहाँ पे वी विल सेपरेट द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स, राइट. So we will add the negative charge molecule, mixture of the molecule, right, into the column. Okay, so negative charge molecule will get binds to the your positive counter ions. Okay, so positive cannot bind here, so all these positive ions will get removed first. यहाँ से वो कॉलम से नीचे आ जाएंगे, they get removed. Okay, और फिर हमारा जो negative ion sample जो था, it get bounds to the counter ion. This negative sample ion then we will remove finally by increasing the pH of the medium. Okay, so इस तरह से anion exchanger will work. Okay, anion exchanger will separate the sample which is having the negative charges, right? Okay, so we will see these types ion exchange reagents. Ion exchange reagents में we will have anion exchange reagents and the cation exchange reagent, right? So anion exchange reagents, we will have the positive charge as a counter ion, so which will separate the negative charge molecule. Whereas the cation exchanger molecule will have the negative charge as a counter ion that separate the positive samples. जिसके पास positive charge है वो samples can be separated from the cation exchanger. Okay? So cation exchanger generally separates what? Separates the bases. Okay? Bases have the positive charge. And anion exchanger generally used when we have to separate the acidic samples. Okay, so acidic and basic sample we can separate based on the anion exchanger or the cation exchanger we will use. Okay, so this is what the idea of ion exchange reagents. Okay, so we will see what are these types of the exchanger materials. Okay, जिसपे हम charge लगाएंगे. Okay, there are two types mostly. One is the polystyrene and second is the cellulose. Okay, cellulose we all know, this is actually the cellulose fiber. Okay, is having the structure like this, which is actually the polymer of the glucose, right. Styrene, polystyrene is what? It is the polymer. Okay, mostly all the thermocol plastics are made up of the polystyrene, which is again a polymer of a divinyl benzene and the styrene together. Okay, so these two kind of a material generally we will use as a stationary phase. Okay, और फिर इस एक्सचेंजर मटेरियल पे हम लगाएंगे चार्जेस. चार्जेस कौन सा? काउंटर आयन चार्ज. ठीक है, अगर हमें उसको एनायनिक एक्सचेंजर बनाना है या फिर कैटायनिक एक्सचेंजर बनाना है, अकॉर्डिंगली हम वो चार्ज इस मटेरियल पे वी विल अटैच, राइट. सो पॉलीस्टायरीन इज व्हाट? अगेन इट इज अ पॉलीमर. ओके, कैसे प्रोड्यूस होगा? इट प्रोड्यूस बाय एडिंग
divinyl benzene together with the styrene. Okay, so styrene and divinyl benzene together form the polystyrene like this. Okay, so it will produce the whole polymer like this. Right? Cellulose is a naturally occurring carbohydrate, right? And it is actually the attachment of several glucose units together, up to the mostly the thousands of the 100 units attached together. Okay, so this is again another polymer, right? So cellulose and the polystyrene generally we will use for the exchanger material as stationary phase. Okay, ये दो चीजें हम यूज करेंगे. In ion exchanger, these are what now we will add the counter ions and the charges on this exchanger material. जो cellulose और styrene है उस पे हम चार्ज लगाएंगे अभी, right? तो चार्ज लगाने के लिए we have again this two types, ionic exchanger and the cationic exchanger, right? ये these two types of exchanger we will use depends on what the stability, molecular weight and the ionic strength of a sample. Okay, कौन सा sample पे ये तीनों factors से stability, molecular weight and ionic strength. On the basis of this we can select whether we can use an ionic exchanger or the cationic exchanger. And this ionic exchanger फिर हम क्या करेंगे, we will pack into the column, right? So we'll see this anionic exchanger. anion exchanger पे लगा रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ओके, और उस पे काउंटर आंसर रहेगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली द anionic exchanger. So what we will do here, this is whole is a exchanger resin, okay, cellulose या styrene रहेगा, उसके ऊपर हम डालेंगे पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय द amines. Mostly the amines are added because they are having the positive charge. So tertiary or the secondary amines we will add, so make them it's a strong exchanger or the weak exchanger. ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर we will add the negative charge काउंटर आयन. यहाँ पे देखो काउंटर आयन है, काउंटर आयन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है. सो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज डालना है तो वी विल ऐड व्हाट, वी विल ऐड द क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस, ओके, which will be the counter ions, that is mobile counter ions. So this is whole process generally makes it the anion exchanger. So क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्यूलोज को या पॉलीस्टाइरीन को लो, उसके ऊपर अमाइंस डाल दो, अमाइंस विल गिव द पॉजिटिव चार्ज, और फिर काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना है हमको, क्लोराइड आयन डाल देना. तो फिर वो एक्सचेंजर मटेरियल पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा. ठीक है, सिमिलरली वी हैव द कैटायन एक्सचेंजर. कैटायन एक्सचेंजर में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज उसको लगा के रखेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला काउंटर आयन रखेंगे. ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज देने के लिए हम क्या डालेंगे, सल्फोनिक एसिड और द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये दो केमिकल से वी विल हैव द नेगेटिव चार्ज मिलेगा इस रेजिन को. ठीक है, रेजिन्स पे हम डालेंगे दिस सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड गिव द नेगेटिव चार्ज. फिर हमको नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ये है काउंटर आयन. काउंटर आयन पॉजिटिव चार्ज डालने के लिए व्हाट विल ऐड, विल ऐड द सोडियम सॉल्ट. ठीक है, सो सोडियम सॉल्ट इट विल बिकम द मोबाइल काउंटर आयंस. ठीक है, सो आ गया समझ में. सो एनायन एक्सचेंजर एंड कैटायन एक्सचेंजर दोनों दे आर मेड अप ऑफ अ केमिकल आइदर सेल्यूलोज और द पॉलीस्टाइरीन. ऑन द बेसिस ऑफ विच अगर एनायन एक्सचेंजर है तो हम अमाइंस यूज करेंगे जो क्या देगा, जो देगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन काउंटर आयंस को देने के लिए क्लोराइड डालेंगे. इन केस ऑफ कैटायन एक्सचेंजर वी विल ऐड द सल्फोनिक एसिड जो क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा एक्सचेंजर को, दैट इज मटेरियल को, और उसके ऊपर लगाएंगे हम सोडियम एज अ काउंटर आयंस. ठीक है, सो इन दिस वे दीज टू जनरली एक्सचेंजर्स आर वर्क्स, राइट. सो नाउ द एग्जैक्ट प्रोसीजर विल कम. ठीक है, we'll have the four step, that is the equilibration of the column, sample addition in the washing, elution, that is separation, and then final regeneration of the column again, right. So very first method is what is the column preparation and the equilibration. Okay, so equilibration preparation में क्या करेंगे, we will take either cellulose or the polystyrene polymer. Okay, we made the slurry of this and then we will add into the glass column like this, right. And after this addition we will equilibrate this column by adding the certain buffers. Okay, so equilibration is very important step because यहाँ पे जो आप counter ions देख रहे हो,
these counter ions should get attached to the this exchanger material. Okay, that is mean this is the एनायनिक एक्सचेंजर जिसपे काउंटर आयंस क्या है, निगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज दिया हमने मटेरियल को. ठीक है, सो दिस टू टुगेदर शुड गेट बाइंड. ये बाइंड के लिए हम क्या करेंगे, बफर डालेंगे एंड दैट बफर जनरली गिव्स द अटैचमेंट ऑफ द नेगेटिव आयंस टू द पॉजिटिव आयंस. ठीक है, सो ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज, ये कॉलम. ठीक है, जिसमें स्टायरीन या सेलुलोज है उसके ऊपर हमने चार्जेस लगा दिए, दोनों चार्जेस. राइट, सो इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए आइदर हम डालेंगे सोडियम और क्लोराइड आयन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द एक्सचेंजर मटेरियल. ठीक है, यहाँ पे आप ब्लू को देख रहे हो, ब्लू काउंटर साइन, दिस इज द काउंटर साइन. द रेड जो चार्ज दिख रहे हैं दैट इज द स्टेशनरी फेज चार्ज. ठीक है, सो इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे हमारे एक्सचेंजर मटेरियल को, फिर उसको इक्विलिब्रेट करेंगे. इक्विलिब्रेशन में क्या करेंगे, हम बफर डालेंगे, यहाँ पे ऊपर से बफर डाल देंगे. ओके, सो बफर क्या करेगा, इट हेल्प्स, इट जॉइंस द ऑल नेगेटिव चार्ज आयंस टू द पॉजिटिव आयन. ठीक है, सो देयर इज अ प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ द चार्जेस ऑन द एक्सचेंजर मटेरियल, देयरफॉर द इक्विलिब्रेशन स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second is the application of the sample. So in this way, on a capillary or a pipette, we will take the sample and then we add the sample over the column like this. Okay, so the sample addition will be like this. Okay, that means your sample, if it is having the negative charge, okay, so it will get binds to the positive charge on the exchanger material. Okay, और जितने भी काउंटर साइंस निगेटिव वाले थे वो क्या होंगे, दे गेट रिप्लेस. ओके, और उसके जगह कौन बाइंड होगा, आपका सैंपल बाइंड होगा जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है. दैट मीन्स देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द सैंपल्स एंड द काउंटर आयंस. ओके, फिर सैंपल काउंटर आयन को हटा देगा एंड वो बाइंड हो जाएगा एक्सचेंजर मटेरियल पे. ठीक है, सो इन दिस वे ऑल द सैंपल विल गेट बाइंड्स, रिप्लेसिंग व्हाट, रिप्लेसिंग द काउंटर आयंस. ठीक है, फिर separation process, that is called the elution process. Elution process, the separation is done by the adding the buffer. ठीक है, बफर ऐड कर देंगे ऑफ अ पर्टिकुलर आयनिक स्ट्रेंथ. अब हमारा सैंपल क्या है, सैंपल के पास है निगेटिव चार्ज है, एनायनिक एक्सचेंजर ही है. ओके, सो वी विल ऐड द बफर विच इज हैविंग द मोर निगेटिव चार्ज. ओके, तो ये निगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, सैंपल को रिप्लेस कर देगा और उसके जगह वो खुद जाके बाइंड हो जाएगा. ठीक है, so again there is a competition between the negative charge ion, जो जिसके पास आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज जहाँ पे ज़्यादा है वो सैंपल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और वो खुद जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा. इस तरह से आपको फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पीक मिलेगा, यानी आपका सैंपल नीचे आ रहा है तो सैंपल से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपको पीक मिलेगा. दैट मीन्स आपका सैंपल आइसोलेट हो गया है. ठीक है, सो फाइनली आपको इस तरह से peaks मिलेंगे based on the different types of the amino acids or the proteins generally we separate. Okay, so these particular peaks will give you the identification of a particular amino acid from the mixture of the samples. Okay, so this is the representation of the data through the spectrophotometry. Right, so ion exchange chromatography mostly is a separation method which consists of mobile phase and the stationary. Mobile phase is buffer. Again, stationary phase is your exchanger material we put into the column, right? So this there are two types, as I told you, anion exchange chromatography and the cation exchange chromatography. In anion exchange chromatography, the negative charge molecules, okay, they get binds to the positive charge here, right? And in this negative positive charge counter ion is produced by the quaternary amino. In cation exchanger material, positive charge molecule binds to the negative exchanger material and this negative exchanger counter ion is produced by the methyl sulfate or the sulfonic acids, right? So that these are the four different steps: conditioning, loading, washing and the elutions. So conditioning was the equilibration. So we will add the buffer molecule to the column. Okay, so this buffer molecule will helps the joining of the charges to every exchanger material charge. Okay, जहाँ जहाँ gap होगा this will be replaced with the charge ion, that is called the equilibrations. Okay, then we will load the sample. Okay, loading is done by the capillary tubes. Okay, sample load होने के बाद these samples
according to their charge, okay, they will get binds to the counter ion. So our sample is a positive charge ion, okay, so it replaces the positive counter ions and get binds to the unbound will get removed from this, okay. So this is what the displacing of the counter ions and binding of the sample. Finally we do washing, okay, so that the unbound sample, this is the unbound, these are the negative charge unbound, so they can be removed by the washing, okay. And finally the separation, that is the elution. So we done by the increasing salt concentration or the pH, okay. In increasing salt concentration we use either the sodium and the chloride ions, okay. So the sodium and chloride ions will helps to remove the sample. जिसके पास लेस चार्ज होगा आयनिक स्ट्रेंथ, ओके, वो सबसे पहले रिमूव हो जाएंगे, राइट. एंड these are the high ionic strength sample, जिसके पास चार्जेस ज्यादा है. So we have to increase the buffer strength. So finally high strength samples then elute later. Okay, so इस तरह से आपको यहाँ पे पीक मिलते जाएंगे. So this is overall the ion exchange chromatography exactly. So in this case, this particularly 4 step as I discussed, that is the equilibration, sample application, that is wash and elution and the regeneration. Okay. So the column is fill up with the stationary phase. This is stationary phase with the attached charge, and this is the counter ion, that is negative counter ion. This is called the equilibration, that is all the charges get binds to the positive charge. Okay, so there is proper binding of them. Then we add the sample having the negative charge, so they displace what? They displace the counter ions from the exchanger material. Okay, so the sample it get binds to the column like this, right? And then washing we generally do. So the washing will remove the unbound materials. Okay, so only the samples will get binds, all unbound. And when we have to do elution, we have to add the buffer, which जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो सैंपल को वहाँ से हटा देगा, वो खुद जाके बाइंड हो जाएगा. सो द रिप्लेस ऑफ द सैंपल अलॉन्ग विद द चार्जेस, राइट. सो वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बफर. एंड फाइनली वॉश करो, फिर से बफर से ये कॉलम फिर से तैयार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन, राइट. फाइनली द एप्लीकेशंस, one of the most important application is the demineralization of the water. That means all the impurities or the other charged ions which are present into the water, we can remove the water, these particular minerals from the water. That's called the softening of the water. Okay? Most of the RO system generally we use in the house. Okay, this is for particularly functions with the ion exchange chromatography. Okay, mostly the mineral ions like calcium, magnesium, okay, or the chloride ions which are present into the water, they can be removed by the ion exchange chromatography. We can extract the enzymes from the tissue, okay, based on their again charges. Okay, we can purify the solutions, okay, free from any impurities. Agar impurities hai, that impurities can be purified from the samples. Okay, ions in organic ions they also can be separated, okay? And the samples or the chemical compounds like sugars, acids and the proteins, they are also separated by the this ion exchange chromatography. Okay, so this is very versatile methods by which we can use for different purposes. Mostly the purification process is very important in this case. The sampleification of the biological sample can be done by the ion exchange chromatography. So this is what ion exchange chromatography in details. I hope this is all understand to you. We will continue in the next class with the another topic. Thank you.